नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम हैं नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ है हमेशा किसके साथ? आपके साथ, हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, आदरणीय सामान्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी भी कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का काफ़ी हिस्सा बहुत जल्दी हिंदुस्तान लेने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल भाई, स्टेटमेंट तो दिए, यस, वक्तव्य तो आया है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे POK में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे रास्ता खाली पड़ा है और हम लोग जाएंगे और उसको ले लेंगे। ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम प्लान फॉर अ कैबिनेट मिनिस्टर टू से समथिंग लाइक दैट। देयर हैज़ टू बी सम प्लान इन माइंड। कोई प्लान होगी माइंड में, तभी ऐसा उन्होंने बोला होगा। बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट यू कांट टेक इट विदाउट फोर्स। देयर इज नो वे दैट वी विल बी एबल टू get Pakistan occupied Kashmir to come back into Jammu and Kashmir without force, because the Pakistanis are not just going to stand there. मतलब वो वहाँ पे खड़े तो हार लेके तो नहीं खड़े होने वाले। ये तो है नहीं कि वो ये बोलेंगे भाई आओ आके ले लो। हाँ, ये हो सकता है माफ़ कीजिएगा, ये हो सकता है कि वहाँ की जो जनता है जब वो ये देखे कि हिंदुस्तानी जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है, इतना ज़्यादा विकास हो गया है, वहाँ के लोग इतने खुशहाल हैं, हर जगह पे स्कूल बन गए, हर जगह पे हॉस्पिटल बन गए हैं, यूनिवर्सिटी बन गई हैं, IIT बन गई हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए, एयरपोर्ट बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए। यहाँ तक के जो अभी ईरानियन कल्चर मिनिस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, कल्चर मिनिस्टर ऑफ द ईरानियन एम्बेसी, जिसको वैसे कल्चर अटैची कहते हैं, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द कल्चर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। ये ईरान के एम्बेसी के जो कल्चर मिनिस्टर थे रब्बानी साहब, ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सो शॉक्ड, he was out of his mind with joy when he said that you have got railways functioning here in these mountains. You have the highest railway bridge in the world in Jammu and Kashmir. साहब, चिनाब के ऊपर हिंदुस्तानी रेलवेज ने सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है रेलवे का पूरी दुनिया का। बिल्कुल, इससे ऊंचा ब्रिज और कोई नहीं है। और वो सब कहाँ पर है? हिंदुस्तानी जम्मू एंड कश्मीर में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना हॉस्पिटल हैं, यहाँ तक कि डिस्पेंसरी तक नहीं है। स्कूल जो है बेचारे टूटे फूटे, मतलब उनको स्कूल भी नहीं कह सकते। एक ज़माने में जो बहुत बहुत सालों पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल गरीब गुरबा इलाके में स्कूल हुआ करते थे, आजकल वहाँ पर भी ऐसे नहीं होते, वैसे वहाँ पर स्कूल हैं। मेरा ये कहना है कि या तो भारत सरकार के पास एक योजना है कि योजनात्मक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के जो रिश्तेदार हैं उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनको ये दिखाया जाए कि हिंदुस्तान में अगर आप आते हैं, हिंदुस्तानी बनकर अगर आप रहते हैं, तो आपके लिए ये सब उपलब्ध है जैसा इंसान को रहना चाहिए। There's general talk, sir, among the entire Pakistan population that what are we talking about and look what's happening there. कश्मीर में डेवलपमेंट है, आपके पास क्या है? हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है? आप वहाँ देखिए, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, डेवलपमेंट है, रेलवे ट्रैक्स है, एयरपोर्ट्स है। Every district of Jammu and Kashmir is full of development. What tourism, the footfalls, the highest of all times. Highest in the last 75 years. हम तो यहाँ पर footfalls गिनते ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसे कोई सिस्टम ही नहीं है जहाँ पर टूरिस्ट के फुटफॉल्स को गिना जाए। That is one of the most responsible ministers' statement to the people, to the media, that look how development is taking place and what development is here. And this is a season of takeovers. First it started with India, when said Kashmir is an integral part of India. Article 370 को हटाओ, 35A को yes, हटाओ. And then the whole thing started. Russia enters Ukraine. Sir, you are talking like you're talking as if this is a company merger and acquisition. But it looks like Elon Musk buys Twitter, so we are going to buy Pakistan. पाकिस्तान में चर्चा है, आम लोगों में चर्चा है कि हम लोग
क्या हम लोग वही पुराने वही बातें, कचरा भरा हुआ बातें कि मुसलमान ये मुसलमान वो। वहाँ कश्मीर को जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जिस प्रकार डेवलपमेंट के लहर वहाँ पर फैला दिया है, दैट इज व्हाट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट। व्हाट आर वी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि एक एप्पल आई स्टोर नहीं है, ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड एप्पल आई स्टोर पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया इज एक्सपोर्टिंग $23 billion वर्थ ऑफ एप्पल फोन्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। That's what Russian President Putin जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि Prime Minister Modi of India is doing a fantastic job. He is one of the biggest patriots of all time for this country, and his Make India campaign is absolutely out of the world. I must say something here. प्रदीप जी, बिल्कुल सही। ये पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। एक शख्स है शाह फैजल साहब, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, लड़के हैं, ही टॉप्ड। बिल्कुल ठीक है साहब, आईएएस एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बच्चे ने टॉप किया था कुछ 6 या 7 साल पहले। एग्जैक्टली। उसके बाद वहां पर लोकल इलेक्शंस हुए, उन्होंने अपनी एक पार्टी फ्लोट कर दी, उन्होंने कहा कि साहब मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं अब यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ना कोई खाला जी का घर तो है नहीं, तो हार गए बेचारे, उनके पैसे वैसे भी लुट गए। ये वापस गए, उन्होंने कहा कि साहब मैं वापस आ सकता हूँ। मैंने ये सुना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के हस्तक्षेप की वजह से, अमित शाह इंटरवीन एंड ही वाज टेकन बैक इनटू द सिविल सर्विसेज, बैक with his seniority intact. Yes. Shah Faisal says India is the only country in the world which provides so many freedoms to Muslims. बिल्कुल। As he says, Indian Muslims have more rights and more freedoms in India than even the so-called Islamic countries. This is what Shah Faisal says. Sir, we need to change the mindset of the Muslim population. And as he says, for them, Mr. Fazal, or for them, as he says, hang on a minute. Yes. As he says, India is a nation of 1.3 billion people. Actually, it's a nation of 1.4 billion people. बिल्कुल। वो क्यों 10 बिलियन को वो हटा देते हैं मुझे मालूम नहीं है। In this, I have been nurtured, taken care of, and at times even pampered. उन्होंने ये कहा कि बाकी सब लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, जैनियों ने, बौद्धों ने मुझको अपने कंधों पर उठा करके यहाँ तक पहुँचाया है। ये हिंदुस्तान है, ये मेरा देश है, भारत माता की जय। दिस इज व्हाट शाह फैजल सेज। ईरानियन जो कल्चरल एम्बेसडर जिस प्रकार से आए थे कॉन्सुलेट के, तो ही इज इक्वल द सेम थिंग। ही सेज शियाज को जिस प्रकार से इंडिया में सहूलियत, फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन टू प्रोपोगेट द रिलीजन, फेथ, बिलीफ, कहाँ पर यू डोंट फाइंड द होल वर्ल्ड। आप पूरे दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे जो सुविधा यहाँ पर देश में, इंडिया में, बोले कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू और शिया के लोग साथ में मिलकर प्रयास करते हैं। इसे नोवेयर डेवलपमेंट, थर्ड क्या डेवलपमेंट है यहाँ पर। He said there's peace, there's sanctity, there's happiness, there's calmness in Kashmir. Where's the problem? Everybody coexisting. Now when you say the takeovers, it's a hostile takeovers. Amit Shah ji, after 370 abrogation, we declared that Kashmir, there's no dispute, this is an essential part of India. And now it is an essential part of India, and there's no dispute about Kashmir. And it is a union territory now. Yes. And second thing, at the same time, Amit Shah said, next is Aksai. Yes. He said it in the parliament, in the floor of the parliament, he said, next is Aksai. Rajnath Singh says, Pakistan occupied POK. Kashmir. But if you see, the entire system जिस प्रकार से है, the ecosystem of economic development, development बोले या art and literature बोले या infrastructure development, there's nothing in these areas. Pakistan occupied Kashmir is filled. The whole system of Pakistan is absolute economic crisis. That they can't defend themselves, they can't fend themselves. So this is an absolute. How can a Pakistan that cannot feed itself take on the might of India today? As on India, today India is a superpower. If you the only thing Pakistan has got. Hang on a minute. And the access. We'll talk about the access. The way जिस प्रकार से पुतिन ने आज प्राइम मिनिस्टर के हर चीज को ओपनली सराहना है, is appreciated, and he told the entire world. As on today, anything coming out from Mr. Putin, it not only shows his closeness to India, but it also shows the new lines created
But in the whole globe. Pradeep ji, we must not India, forget one thing. Russia, And China. Perhaps China. Yes. Perhaps China. So that it just openly सराहना उसका एक ही चीज आता है. He is highlighting that you got a new world order that includes. Pradeep ji, there is one peace. thing Pakistan has got. Pakistan has one major asset. Let's be very clear. पाकिस्तान का साहब ऐसा है, अभी शहबाज शरीफ साहब ने क्या बोला, अपने वो नॉर्मल भीख मांगने वाले टूर पे गए थे हर जगह पे, और उन्होंने कहा कि भाई जितनी हमें अपेक्षा थी उससे तो 10% भी हमें नहीं मिले जो पैसे मिलने चाहिए. बिल्कुल ठीक है साहब. अब वो बाकी दुनिया के ऊपर है, देख लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, अब ये किसी का और दूसरे वालों के हाथ में पड़ गया तो हम क्या करें उसके बारे में, आप लोगों को सोचना है. कहने का मतलब ये हुआ जैसे होता है ना गांव में, एग्जैक्टली बाकी हर जगह पे जो बहुत बड़ा जमींदार होता है, बहुत आदमी, बहुत पावरफुल आदमी होता है, वो शेर चीते पाल लेता है. ठीक है साहब. अब वो शेर चीते जब पाल रहा होता है तब उसके पास बड़े पैसे होते हैं, उसके पैसे अगर ख़त्म हो गए फिर वो पूरे गांव में जाकर के बोलता है कि भाई देखिए मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, अब मुझे अपने ये दीवार जो है दरवाजे खोलने पड़ेंगे और ये शेर चीते आकर के तुम लोगों को खाएंगे, तुम्हारे बच्चों को खाएंगे. एग्जैक्टली. या तो तुम लोग इनको खिलाओ. यस. That's exactly what Pakistan has always done. What they have said earlier, they used to say we are the only people who can control the Taliban. Now that is gone. Now they say we have a nuclear arsenal. हमारे पास एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, अलग अलग किस्म के बम है हमारे पास. ठीक है साहब. ये हमारा जो पूरा न्यूक्लियर असला है अगर किसी गैर जिम्मेदाराना सरकार के हाथ में पहुंच गया तो हाथों में पहुंच गया, तो फिर दुनिया अपने आप देख ले. एग्जैक्टली. That's all that they do. Let's be very clear. It is total blackmail. If you see, हर जगह जा करके ये बोल रहे हैं या तो हमें भीख दे दो या आगे भाई सोच लो. कहने का मतलब ये हुआ. देखोगे this entire transformation where Pakistan is concerned, acceptance that they are guns on hire. Yes. It started when Imran Khan openly said that when he was the prime minister that we Pakistan are not going to be guns for hire. Yes. We are not going to be. We are not going to do the world's dirty work. We are not mercenaries. We are not. We are not. So they threw him out. they threw him out. That is true. But that is the acceptance that we have to seek inward and do something of economic development. हमारे इकोनॉमी कहाँ शैम्बल्स पे, हम तो इस पे कि आप उसको मारो इसको मारो. When Pervez Musharraf in his book he openly says we used to breed and foster terrorists. Yes. And then take ransom for them and kill them. ब्रीड भी करते थे, किल भी करते थे, दोनों के लिए पैसे मिलते थे. अरे ओसामा बिन लादेन used to get money to create terrorists and send them in the Afghan border, and then we used to take money to kill them, money to eliminate them, and there's that huge ransom amounts for to kill them. अरे वही आपने किया ना. अभी भी देख लीजिए, ओसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद में मिला. बिल्कुल. ठीक है साहब. अल जवाहिरी, बिल्कुल. आपने अभी अमेरिकन को इन्फॉर्मेशन दी कि वो यहाँ कहाँ मिला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे. एग्जैक्टली. और जब तालिबान का शुरा होता है, मजलिस शुरा जो होता है उनका, वो कहाँ पर होता है? क्वेटा में होता है. The Quetta Shura is the most powerful shura of the Taliban, or used to be, not anymore of course. Yes. कहाँ होता था वो? बलूचिस्तान में होता था. मेरा ये कहना है that the Americans must realize, and I hope they have, that these guys will continue to blackmail you as long as you are willing to be blackmailed. That's it. That's all that Pakistan does. Whereas as far as India is concerned, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ. अभी हाल ही में India sent out the heaviest rocket for any nation anywhere in the world just now into space and launched about 30 satellites. Yes. 30 satellite. 36, yes, in space. 30 के 36 सैटेलाइट, जिसमें ब्रिटेन के भी सैटेलाइट थे, यूरोप के थे, और इंसिडेंटली एक पाकिस्तान का भी था. बिल्कुल. In case you want to know. Yes. All over. As far as the Pakistanis are concerned, the Pakistanis also sent out something in the air. What was it? Our nuclear arsenal is safe only as long as you keep giving us money. Exactly. आप हमें पैसे देते रहिए, हमारे एटम बम तब तक सुरक्षित हैं. आपने जिस दिन पैसे देने बंद कर दिए, उस दिन इनका क्या होगा हमें मालूम नहीं है. वो क्या है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो शायद टेक ओवर कर ले और ना जाने अफगानिस्तान और ना जाने क्या है. देयर इज अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टीटीपी. वो हर जगह पे अटैक कर रही है पाकिस्तान. बिल्कुल. मेरा ये कहना है कि आई एम एब्सोल्युटली सर्टन
that this statement of Rajnath Singh जी का ये जो वक्तव्य है, it is not a casual statement. It's not. Rajasabai is a responsible minister. He is the third senior most cabinet minister. Yes. Rajnath Singh ji जब ये कहते हैं, that means a discussion has taken place. बिल्कुल. That means the groundwork has been laid. Which groundwork for both Aksai Chin as well as Pakistan occupied Kashmir. Which means at some point of time, maybe next year, maybe the year after that, you will see a movement when the people of Pakistan occupied Kashmir will themselves demand a merger with Indian Kashmir. And they will say that we are going that's happening. That's it. That's such a big, massive discussions in all channels of Pakistan. Ki what are we doing as an economy? Where are we standing? Look at India, where it is. And every discussion of this comes, we have become a place for mercenaries. We are guns for hire. We have to look inward. We can't retain, keep our entire country intact. And we are always talking about Kashmir. And look how Kashmir has been developed. And the new lines, जिस प्रकार से Putin, Modi and China has not opened up. China has not opened up as yet, but it clearly shows how Jaishankar replies to the world media, how he talks to them. That he says, "Our problem will be your problem when you understand that our problem is your problem." You don't until you take. At the same time, he talks on both ways, where he says the problem at the Chinese border should be a concern for all of you. If you don't take that as a concern, then don't expect us. We are going to trade the way we want. We are going to trade with any country with interest of our people uppermost in our minds. We are not going to be taken over by the interest of the West or the interest of the US. और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, प्रदीप भाई, ये बात एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी ये बात कोई 6-7 बार बोल चुके हैं यहाँ पर इसी शो में। क्या बोल चुके हैं इनको शायद याद नहीं है, अब याद आ जाएगा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचती है तो आप पाकिस्तानी चैनल देखें। बार बार पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि काश हमारे पास नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री होता। एग्जैक्टली। अरे भाई, सारी दुनिया वहां पर, जो सारी दुनिया जो है अभी, जैसे व्लादिमीर पुतिन हो गए, व्लादिमीर पुतिन ही नहीं, बाकी जो बाइडन हो गए, बाकी जितने भी लोग हैं, अपने प्रेसिडेंट मैक्रोन हो गए, प्रेसिडेंट ट्रूडो हो गए, मैं आपको बोल रहा हूं हर जितने भी दुनिया के जितने भी लीडर हैं एक तरफ हो जाएं, और जब आपका सो कॉल्ड दुश्मन, हम तो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते साहब, हमारे लिए छोटा सा देश है, गलती से हमारे पड़ोस में है। अगर हिंदुस्तान के पड़ोस में नहीं होता ना पाकिस्तान, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करते। जब आपका सो कॉल्ड दुश्मन देश, जिसको हम दुश्मन नहीं समझते, जब वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है, तो हमारे जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनको जरा थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। सीधी सादी बात है, बिकॉज मिस्टर मोदी हैज शोन what the power of India really is. हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है, भारत माता की जय में कितनी शक्ति है, ये नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में दिखाया है। याद रख लीजिए, 2014 से लेकर के आज तक हो सकता है कि लोग हमें संगी गए, आरएसएस के गुंडे गए, पता नहीं क्या कुछ, मुझे तो मतलब इतने साल हो गए क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं सीधी सादी बात बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने एक तो जो विकास की लहर लाई है हिंदुस्तान में, नंबर 2 जो हिंदुस्तान की जो शक्ति है, भारत की जो शक्ति है, वो पूरी दुनिया में आज की तारीख में हर कोई मानता है कि हिंदुस्तान अकेला देश है जिसने ये कहा कि हम तो भैया गैस खरीदेंगे रशिया से, हम मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेंगे रशिया से अगर हमें कुछ और देना है, if Russia wants Indian wheat, we will supply it to the Russians. He says only our interest, our interest. That's it. Uppermost in our minds. That's it. And what have the Americans done? Nothing. They have said, up to you. Fine. They tried to pressurize, saying that we have to supply essential spares to Pakistan, F-16s that have been built. Go ahead. We need to do this. We need to do that. शौक से करो. The point is, sir, जिस प्रकार से चल रहा है डेवलपमेंट के लहर, जिस प्रकार से every our ministers are emboldened to answer to the world media, कि जिस प्रकार से हमारे bilaterals होगा, like we talked about when Mr. Modi called up the Rishi Sunak. Yes. The first thing is bilateral. How we are going to progress our trades, the trade bilateral. जिस प्रकार से हमारे economy will prosper, the trade and commerce को कैसे आगे बढ़ाए,
So everywhere we talk about these things, and every country in the world wants to get in touch with India. And there was a joke also of UK में जब the most feared thing, why are the people talking so badly? I mean, some people talking badly of the Prime Minister. He says that UK, is he going to sell the UK to India? That was so. India is a matter. When anybody raises a point about India, they talk about India's economic growth. Yes. Even the World Bank जिस प्रकार से projections किया है, India's growth is phenomenal. It's the highest in the world. Highest in the world. That's right. Look at the amount, and that kind of growth can be achieved only if you have one particular leadership with absolutely only development agenda in the mind. Yes. And the whole world believes that this man can deliver us. This man can deliver anything to that country in a time frame manner. Because earlier we had prime ministers who couldn't commit anything to the world. They all wanted to invest. Nobody knew the return date, whether it's going to happen at all. Because there are a lot of litigations. Here we find there's a competition within states. One state like here, Gujarat taking away all the projects that are coming into Maharashtra. Two projects. But there is a talk. Here इधर झगड़ा हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इधर आना चाहिए, ये प्रोजेक्ट इधर आना चाहिए, हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए. दैट इज पॉजिटिव, दैट इज लोगों के हित में. यू टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट fostering and improving economic sense, this is the biggest fight. The right direction, and the leadership of Mr. Modi is showing to the whole world that we can put money in India. अरे वो वेदांता का सिलिकॉन चिप प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में गया. बिल्कुल. The biggest largest silicon chip factory in the world is going to come up in Gujarat. Exactly. Now the Tata Airbus factory is also coming up in Gujarat. ठीक है साहब. अब अभी महाराष्ट्र में ये तकलीफ हो रही है कि अभी तक तो जो सरकार थी उनके लोग अब कह रहे हैं कि देखो एक और प्रोजेक्ट चला गया. अरे भाई 2.5 साल तक आप थे, आपने क्या किया? 2.5 साल से आपने लटका के रखा. सीधी बात है. अगर आप लटका के नहीं रखते तो आज महाराष्ट्र में होता. Now the problem with Maharashtra is that everywhere you go there is a problem with regard to unions, there is a problem with regard to all those people who need to be paid, etc. And by the way, there are some allegations being made that in the previous government some gratification was being expected in all sorts of quarters. So naturally people will go wherever they are welcomed. That's it. क्योंकि गुजरात में साहब आज की तारीख में सीधी बात है, किसी गुजरात के मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी से कुछ मांग ले. वहां पर सीधी बात है क्योंकि मोदी की डायरेक्ट निगरानी में है, वो नहीं होने वाला. आप देखो यहाँ पर डेवलपमेंट जिस प्रकार से बुलेट ट्रेन हो या ऑल द मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो या अलग अलग MIDC का डिफ्रीज करना कि लैंड अलॉटमेंट, everything is moving in a particular direction. Creation of jobs, it is happening. It has never happened. 2.5 years जो रोक के रखा था उसको full fledged में. And if you're talking about land acquisition, you're talking about money circulating among the people. और उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है, चाहे बुलेट ट्रेन हो या कार शेड हो या मेट्रो हो, land acquisition within a time frame and settlement. Yes. Giving to the people, relief, rehabilitation. Economic activities flourishing everywhere. The tide of economic development has taken over Maharashtra. एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट्स चला गया, बट आप एग्जिस्टिंग 99 बुलेट ट्रेन 99,000 crore प्रोजेक्ट RA 10 projects अलग अलग, and look at the way development is taking place. A flurry of and Aramco. Don't forget the Aramco refinery. Yes, that refinery, by the way, has been revived. I have revived. 2.5 साल से pending पड़ा है. It is being revived. So there is a flurry of activities in the center. Now everywhere leadership counts. There we should give credit to Mr. Modi. Whether it's power or showing or flexing your muscles, he has done it. Whether it is getting business within the country, he has done it. Increasing bilaterals among all the economic giants, he has done it. And in the state, we see Eknath Shinde and Devendra Fadnavis following up what Mr. Modi has left from there and seeing that Maharashtra is in the top phase for development. पूरे जगह महाराष्ट्र को प्रगति की पथ पर लेके चलो. That is what Eknath Shinde tells the Prime Minister, is always telling him, इसको महाराष्ट्र को प्रगति की ओर लेके चलो, पथ पे लेके चलो. Fantastic. That without development there's nothing. Without money, economy drives. And when money comes in, everything else flourishes. And we are seeing that kind of flourish in India. Not only the world is seeing it, the World Bank is seeing it, Russia is seeing it. All the major countries are seeing what India is capable of. And that comes
only when you have a strong, determined, selfless leader. And a strong, determined, selfless leader focused only on India. जो हमेशा सिर्फ 24 घंटे सिर्फ हिंदुस्तान की बात सोचता है. Exactly. सीधी सादी बात है. There is nothing extraneous. And by the way, Mr. Modi does not have to report to anybody else. Unlike the previous Prime Minister. सीधी सादी बात है. Unlike Dr. Manmohan Singh, very unfortunately, he had to report to a whole cabal around Mrs. Sonia Gandhi as to what he should do next. Very fortunately, Mr. Modi doesn't have to do that. And we are very fortunate in that. And I am reasonably certain the path of development that we have chosen is now the only path on which India will travel. Let's be very clear on that. Sir. Irrespective of everything else. Yes. And of course, एक और चीज़ के बारे में बात कर लें कि राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई. Good for him. Though I'm not very sure as to what is the purpose of the Bharat Jodo Yatra, unless the purpose is just to acquaint Mr. Rahul Gandhi with various places in India. अच्छी बात है. Right from Mahatma Gandhi, you can sing Mahatma Gandhi toured the entire length and breadth of the country. Jawaharlal Nehru after that, length and breadth of the country. Indira Gandhi, length and breadth. Rajiv Gandhi, length and breadth. Now Rahul Gandhi. लेकिन राहुल गांधी जी से सिर्फ ये मुझे ज़रा कंफ्यूजन है इस पे अगर आप रोशनी डालें अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कि गुजरात में कभी भी चुनाव अनाउंस हो सकते हैं. हो सकता है जनवरी हो फरवरी हो जब मर्जी हो. वहां पर कांग्रेस की कैंपेन इज नॉन एग्जिस्टेंट. Not now. There are only two parties over there right now who are vying with each other. One is the Congress, one is the BJP. माफ कीजिएगा. एक तो भारतीय जनता पार्टी है ही और सामने उसके आम आदमी पार्टी. आम आदमी party has taken over the mind space. बिल्कुल. Whether or not they have taken over the political space or not, we will come to know only after the elections. But they're given a challenge, they're given a push, they're given a thrust. So where is the Congress? क्योंकि कांग्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कांग्रेस की जो मतलब विलेज लेवल से लेकर के गांव के लेवल से लेकर के जिला लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जबरदस्त है कांग्रेस की. अब मेरा ये कहना है कि नेशनल प्रेजेंस भाई सिर्फ गुजरात की भी अगर बात करें तो कांग्रेस की प्रेजेंस वहां पे जबरदस्त है. एज वाज एग्जेम्प्लिफाइड in the last election they got 62 seats. बिल्कुल. स्टेट असेंबली they are a big threat to the BJP and BJP knows it very well. मेरा ये कहना है कि 62 सीटें आई थी उनकी बिल्कुल पिछली बार. Yes. And I think the BJP got about कांटे के टक्कर था सर. BJP got about 104 106. 180 करीब सीट हैं गुजरात में. लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस है कहाँ पे. आज की तारीख में कोई कांग्रेस की आवाज गुजरात से सुनाई नहीं देती है. So has the Congress given up, or what is it that they are waiting for? Or they're going to pull a rabbit out of a hat and do something, or whatever? Or is it that because last time Hardik Patel and other people were with them, therefore we heard a lot about the Congress? This time because Hardik Patel has joined the BJP, therefore the Congress has just gone to sleep. What could be the reason? The 80 plus, the Adhyaksha Mallikarjun Kharge. Ji. Now, is he a maverick? At the age of 80, he's going to bring reforms within the Congress, or he's going to bulldoze Gujarat with his charisma, whatever. No, he lacks, I know, on the face of it, he lacks the charisma, he lacks what you call a maverick, or he can pull off something rabbit out of the hat, what you talked about in Gujarat. Because Congress has I don't see it happening. entered the race out there. The Congress was only talking about implementing the Udaipur resolution. That itself is a big thing. Agar 50% of the posts are going to people of less than 50 years old, that's a fantastic thing. Yeah, but it's an internal party thing. Internal party thing. Does it really concern people? It doesn't concern people. But here you got a man who moves very slowly, an 80 octogenarian. How is he going to show? Because you need a leadership. You need a proper leadership like Mr. Modi, Amit Shah. Dashing, right, Jaishankar, right from the center, attack from the center, the battle, and they lead the battles. How far can Kharge do it? It's for anybody to guess. Na shakal se wo dikhta hai, na unke purane action se wo dikhta hai. But that'll be very, very interesting to see what the Congress does. It'll be very interesting. वही राम भरोसे जैसे 2004 में आ गए थे. गलती से. Under all expectations of BJP coming, they won. So a fluke doesn't happen all the time. It doesn't happen all the time. You really have to work on issues that touches the most poorest of poor, and that should be your center from where you're going to rise upwards. Right, and plans for the most poorest of poor. And here I promise our viewers, अपने दर्शकों को मैं वादा करता हूँ कि very shortly we'll also be talking about how Mr. Modi's look east
campaign has really worked. नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट हुई है, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे, जो वहाँ पर विकास हुआ है वो देखने लायक है. It is absolutely wonderful what has happened in the northeastern states. We will talk about that in the time to come. For the moment, Mr. Rajnath Singh saying POK will shortly be part of India. Now that is wonderful news, especially for the people of POK. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि बहुत जल्दी उनको भी मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है और इंसानों की तरह किस तरीके से जिया जाता है. Very shortly, you will also see the benefits of what the people of Jammu and Kashmir in India have seen. And with that, that's all that we've got in tonight's show on Nation Now. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम.